The topic of discussion is fundamental concepts of chemistry, and the subtopic is stoichiometry. Stoichiometry is defined as the branch of chemistry which deals with the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation. It means it deals with the quantitative comparison between reactants and products. In this lecture, we will see रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले रिएक्टेंट से कितनी अमाउंट प्रेजेंट थी और रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बने और रिएक्टेंट के लेफ्ट ओवर अमाउंट कितनी है. सो द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई वी नीड स्टोइकियोमेट्री and the answer lies in the limitations of chemical equations that are they don't tell about the conditions, rate of reaction, physical state of reactants and products, mechanism of reaction, feasibility of reaction. Either किन conditions पे reaction proceed कर रहा है forward direction में या backward direction में, वो हमें rate नहीं बताती. इसके अलावा जो reactants और products हैं वो किस state में present हैं, either they're in solid, liquid और gaseous state की हमें chemical equations नहीं बताती. इसके अलावा mechanism of reaction, हर reaction different mechanism के through proceed करता है. And feasibility of reaction, spontaneous and non-spontaneous reaction आया किस टाइप का है वो भी हमें chemical equation से नहीं पता चलता. Here are the assumptions which we make during stoichiometric calculations. These are all the reactants are completely converted into products. यानी जितने reactions हैं उन्हें product में convert होना चाहिए. It means reaction should be in forward direction and irreversible. Reversible reaction नहीं होना चाहिए. No side reaction occurs. While doing calculations, law of conservation of mass and the law of definite proportions must be obeyed. In the next slide, we will discuss about these laws. Law of conservation of mass states that mass cannot be created nor destroyed, but it is transformed from one form to another. Similar is in this reaction. Methane is 16 gram, oxygen is 64 grams. ठीक है, टोटल सम इज 80 ग्राम. ये रिएक्टेंट्स हैं. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है CO2 प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम्स, वाटर इज 2 इंटू 18 ग्राम्स. इनका जब हम सम करेंगे तो 80 ग्राम आएगा. ठीक है, यहाँ पे दे वर डिफरेंट कंपाउंड्स, मीथेन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन मास इनका क्या है, सेम. सो मास ना तो प्रोड्यूस हुआ ना ही डिस्ट्रॉय हुआ, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और कंजर्व भी रहा. देयर इज नो चेंज इन द masses. 80 ग्राम 80 ग्राम. Next is law of definite proportions, which states that a given chemical compound always contains the same elements in the exact same proportions by mass. यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड रहेगी. इट डजंट मैटर कि उसको किस मेथड के जरिए प्रिपेयर किया गया. लाइक वाटर, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बन जाएगा. ये नहीं हो सकता कि हम 3 एटम हाइड्रोजन के ले लें और 1 ऑक्सीजन का ले लें. आप उसको किसी भी मेथड से प्रिपेयर करेंगे, वाटर हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम के रिएक्ट करने से बनेगा. सो 2 ग्राम अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, so we will get 18 ग्राम ऑफ वाटर. Similar is in this example. अगर हमने NO बनाना है तो हमें एक एटम चाहिए होगा नाइट्रोजन का और एक एटम चाहिए होगा ऑक्सीजन का. They react and form NO. NO2 अगर हमें चाहिए, so एक एटम नाइट्रोजन का लेंगे, 2 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे. They will combine to form NO2. किसी भी मेथड से NO2 की प्रिपरेशन हो रही है, डजंट मैटर. एक ही एटम नाइट्रोजन का यूज होगा, 2 एटम्स ऑक्सीजन का यूज होंगे और NO2 बन जाएगा. मेथड चेंज करने से वो NO3 या NO4 में कन्वर्ट नहीं होगा. Here are some chemical compounds जिन्हें आप किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लें, इनकी जो रेशियोज हैं वो फिक्स्ड रहेंगी.
NO में 1:1, NO2 में 1:2, N2O में 2:1, N2O2 में 2:2, N2O5 में 2:85. So ratios must be constant. It doesn't matter आप कौन सा method use कर रहे हैं उनको prepare करने के लिए. Here are the practical applications of stoichiometry. Can predict the amount of product that form in chemical reaction based on the amounts of reactants. यानी कि reactants के amount को देख के हम easily predict कर सकते हैं कि हमें product की कितनी amount obtain होगी at the end of the reaction. Like, अगर हमारे पास 2 gram of hydrogen है and 16 gram of oxygen है, we can predict that at the end of the reaction we will get 18 gram of water. Next, can predict how much of the reactants are necessary to form a given amount of product. यानी कि एक given amount of product हमें बनाना है, यानी कि 18 gram of water बनाना है, तो हमें कितनी amount में reactants required होंगे. Can predict how much of one reactant is required to completely react with another reactant. For example, अगर हमें 18 gram of water बनाना है और हमारे पास 16 gram of oxygen है, so we can find कि हमें हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट चाहिए होगी कि वो completely react करे 16 gram of oxygen के साथ और हमें 18 gram of water मिले. Here are some relations which we can study via stoichiometric calculations. Mass-mass relationship, mass-mole relationship or mole-mass relationship, mass-volume relationship or volume-mass relationship, and last one is mole-mole relationship. Via stoichiometric calculations, we can even find number of moles, masses, and number of formula units or particles in a particular compound. Here is a diagram which will help you in calculations. Number of moles हम किस तरह से find out करते हैं हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अगर आपके पास volume given है, mass given है और particles given है, तो आप different formulas के जरिए number of moles find out कर सकते हैं. Here is another detailed diagram which tells you how to calculate moles. अगर आपके पास 3 different parameters हों, mass given है आपको, number of particles given है या volume given है. अगर आपके पास mass given है तो आप उसको molar mass से divide करें, you will find out number of moles. अगर आपके पास particles हैं तो आप उसे divide करें Avogadro's number से, you will get number of moles. and अगर आपके पास किसी भी sample का volume है तो उसे molar volume से divide करके you can find number of moles. अगर आपको इससे opposite moles given है और आपको mass, particles या volume find out करना है तो आप multiply कर देंगे उसके. Here is a practice MCQ stated as how much aluminium is required to form alumina with 12 gram of oxygen, and the options are 27 grams, 13.5 gram, 54 gram, and 24 gram, and the correct answer is 13.5 gram. In the next slide we will see the solution. So for the solution we will first find number of moles of oxygen. Given mass is 12, molar mass is 32, so number of moles would be 3/8. Balanced chemical equation is 4 aluminium reacts with 3 moles of oxygen to give 2 moles of alumina. So अगर ऑक्सीजन के 3 moles 4 moles of aluminium के साथ react करते हैं, so 1 mole कितने के साथ react करेगा? 4/3 के साथ. So अगर 1 mole 4/3 के साथ react करेगा, 3/8 moles कितने के साथ react करेंगे उसे हम यहाँ पे लाके multiply कर देंगे. We will get 1/2, यानी कि 3/8 moles of oxygen के साथ half mole of aluminium react करेगा to form alumina. So mass of aluminium equals to mole into molar mass. Value substitute करेंगे, mole is 1/2 and molar mass is 27 and the answer would be 13.5 grams. Next MCQs is which one is the molar volume of gas at STP, and the options are 24 decimeter cube, 80 decimeter cube, 22.4 decimeter cube or 40 decimeter cube.
and the correct answer is 22.4 decimeter cube. So the molar volume of any gas at STP is 22.4 decimeter cube. Next question is, when 1 mole of each of the following is completely burnt in oxygen, which will give the largest mass of CO2? And the options are carbon monoxide, diamond, ethane, and methane. And the correct answer is ethane. In the next slide, we will see the solutions. So let's see the solution. When CO combines with oxygen or undergo combustion, it gives 1 mole of CO2. When diamond undergoes combustion, it gives 1 mole of CO2. When methane combines with oxygen, it also gives 1 mole of carbon dioxide, while ethane, when combined with oxygen or undergoes combustion, gives 2 mole of carbon dioxide. So 1 mole of ethane gives largest mole and mass of CO2. That's why the correct answer was ethane. I hope you have understood the lecture very well, and thank you so much.